हाय गाइस, आज अपन देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 फ्रॉम जेई एडवांस 2020 पेपर, राइट। तो क्वेश्चन कहता है कि a football of radius capital R is kept on a hole of radius small r is less than capital R, made on a plank kept horizontally. One end of the plank is now lifted so that it gets tilted at an angle theta from the horizontal as shown in the figure. The maximum value of theta so that the football does not start rolling down the plank satisfies what? ठीक है, तो बेसिकली क्वेश्चन का सेटअप कुछ ऐसा है कि आपके पास एक destroyed, सो आपके पास एक प्लैंक है जो इनिशियली हॉरिजॉन्टल है। तो आप इमेजिन करिए आपका प्लैंक है, हॉरिजॉन्टली रखा हुआ है और उसके ऊपर एक होल के अंदर एक फुटबॉल रखा हुआ है, राइट। सो इफ आई ड्रॉ इट प्रॉपर्ली इट लुक्स लाइक this, right? So the football is sitting on this plank and there is a small hole in which it is actually sitting, right? There is a hole in which the ball is sitting, right? तो ये होल की रेडियस स्मॉल आर दी हुई है, बॉल की रेडियस है कैपिटल आर। सो दिस इज द सेटअप। आप अभी इस प्लैंक को अराउंड दिस एक्सिस रोटेट करोगे, राइट, टिल्ट करोगे, सो दिस विल गो अप दिस वे। तो एक एंगल के ऊपर दिस बॉल विल स्टार्ट रोलिंग, राइट। तो आपको बताना ये एंगल क्या होगा, राइट। सबसे पहली चीज एज ऑलवेज इन फिजिक्स, विजुलाइज द सिचुएशन क्या है। तो ये रही अपनी सिचुएशन। नेक्स्ट स्टेप इज फ्री बॉडी डायग्राम। तो फटाक से फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। क्या फोर्सेस इसके ऊपर, ये है नीचे की तरफ, इट्स गोना हैव इट्स ओन ग्रेविटेशनल फोर्स mg, राइट। जस्ट अ मिनट, या दिस इज mg नीचे की तरफ। अभी और क्या फोर्सेस है उसके ऊपर, नॉर्मल फोर्सेस, राइट। नॉर्मल फोर्सेस फ्रॉम द प्लैंक टू द बॉल। तो अभी ये नॉर्मल फोर्सेस एक्चुअली आप देखोगे इट्स गोना फॉर्म अ कोन, राइट। हर एक पॉइंट से इस प्रकार से एक नॉर्मल फोर्स आने वाला है। It's going to form actually a cone of normal forces from the outer boundary of that contact to the center of the sphere. But cross section में you will see only two forces like this, right? So let's call them N1 and N2, right? ये है आपका एक force N1 बोलता हूँ उसको, इसको N2 बोलता हूँ। Before that, let me just move this mg part to somewhere here. Yeah. So I'll draw the other normal force. Yes. So let me call them N1 एंड टू। ओके, सो नाउ अभी आप इमेजिन करिए जब ये प्लैंक हॉरिजॉन्टल है, ठीक है, जब ये प्लैंक हॉरिजॉन्टल है तब n1 एंड n2 इक्वल है, राइट। नाउ व्हेन आई स्टार्ट टिल्टिंग दिस प्लैंक, आपको क्या होने वाला है बिटवीन दीज टू, द वैल्यूज ऑफ n1 एंड n2 आर गोइंग टू चेंज, राइट। सो आप इमेजिन करोगे तो ऑब्वियसली द बॉल इज गोइंग टू पुश डाउनवर्ड्स, राइट। सो n2 इज गोइंग टू बी लार्जर and n1 is going to be smaller as you increase the tilt at a certain point, ठीक है, जिस पॉइंट पे वो रोटेट करना स्टार्ट करेगा n1 will become 0 and n2 will be the only normal force at which it is going to start to rotate. So now इसको visualize करिए. So let's say if you draw one or two pictures that will give you some idea. So सबसे पहली चीज let's draw a intermediate tilt. जब आपका tilt कुछ ऐसा है, right, आपने बॉल बनाई ऐसी, right, it is somewhere here, okay, and आपके जो mg है, mg is downwards, let me draw it in a different color. So mg नीचे की तरफ है, आपका एक नॉर्मल फोर्स है ऐसे, दूसरा नॉर्मल फोर्स है ऐसे, राइट। सो यहाँ पे यू कैन इमेजिन दिस इज n2 n1 को अगर अपन लिख दे, दिस इज n2 n1, so n2 is greater than n1, राइट। नाउ एट अ सर्टेन पॉइंट लेट्स इमेजिन कि बहुत ज़्यादा टिल्ट कर लिया मैंने, सो व्हाट इज गोना हैपन, लेट्स से मेरी टिल्ट बहुत ज़्यादा है, ऐसी कुछ टिल्ट है, राइट। योर बॉल इज लेट्स से somewhere like this, ठीक है। So now if you draw the forces again in the right color, let's say I'll draw something like this, n1 is going to be like this is going to be like this, करेक्ट, एंड आपका mg है नीचे की तरफ, ठीक है। तो आप यहाँ पे इमेजिन करिए, यहाँ पे ये जो बॉल, ये जो टिल्ट है, इट इज वेरी लार्ज नाउ, राइट। एट दिस पॉइंट आपको क्या लगता है ये बॉल रहेगी यहाँ पे, ये आपका फर्स्ट ऑफ ऑल विजुअलाइज करिए किस पॉइंट का अराउंड वो रोटेट करेगा। दिस इज द पॉइंट एट विच अबाउट विच इट्स गोना रोटेट, राइट। दिस इज लाइक योर इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन, करेक्ट। इस पॉइंट के अराउंड वो रोटेट करने वाला है। आपकी ग्रेविटेशनल टॉर्क नीचे की तरफ है, अगर यहाँ पे आप देखोगे, ठीक है, तो आपकी ग्रेविटेशनल टॉर्क लेफ्ट साइड में है, करेक्ट। सो दैट इज द इंट्यूशन, ठीक है। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड ये है आपकी इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन, correct, this point. So this is the first point you have to understand, this is your instantaneous axis of rotation, इसके अराउंड ये रोटेट करने वाला है ग्रेविटेशनल टॉर्क की वजह से,
right? So here you can imagine n2 and n1, right? Here also n2 is going to be greater than n1, but n1 is probably going to be 0, correct? क्योंकि वो rotate होने वाला है, so it's going to lose contact over here, right? So जो limiting case है, if you draw that, that should tell you everything. And what is the limiting case, guys? Limiting case is what? जब वो just at the boundary है जहाँ पे वो rotate नहीं हो रहा है, but if you increase the tilt slightly, it's going to start rotate. So what is causing the torque for this? If n1 is becoming 0 after a certain point, okay, so the only force, let's say I delete this n1 because it's going to be 0, okay, क्योंकि contact है ही नहीं, it's going to be like, it's going to be only n2 and the gravitational force mg, right? So abhi n2 is passing through the instantaneous axis of rotation, so there is no torque because of n2, right? So torque because of n2 is going to be 0, so only torque is because of mg, correct? So torque because of mg has to be 0 at the limiting point. तो बस that's your condition. तो आप अगर पिक्चर बनाओगे उसकी लिमिटिंग पॉइंट के ऊपर कैसे होने वाला है, लेट्स से दिस इज योर टिल्ट, ओके, तो आपका mg हैज टू बी, mg is always vertical, but also it is lying on the same line as your contact line, right? Let's say if I draw it something like this, yeah. So आपका जो contact है with the plane, it is vertical now. So if you draw this and try to draw a picture, let's see this point, ऐसा कुछ, ठीक है? तो आपका जो कांटेक्ट पॉइंट है ये वर्टिकल है अभी, राइट? आपकी ये कुछ लाइन ऐसी होगी, राइट? तो दिस इज द कंडीशन. तो आपको ये एंगल थीटा बताना है कितना है. सो अभी तो बहुत सिंपल ज्योमेट्री का प्रॉब्लम है. पिक्चर इज नॉट लुकिंग ग्रेट क्योंकि मेरा सेंटर इज नॉट करेक्ट. सो लेट मी जस्ट correct this a bit. Say I delete this, okay, and I delete the other lines. This is gone, this is gone, okay. Yeah, so now let us say, oops, yeah, so आपका center कुछ ऐसा है and this line is vertical, okay. तो आपका ये जो अगर आप picture बनाओगे तो this is 90 degrees, this line is vertical, okay, this is a straight line, it doesn't look like it, sorry for that, right? So this is theta, so this is 90 minus theta, this is also 90 minus theta, this is going to be theta. Bus, and what is the picture over here? This is small r, this is capital R. So you will have sine theta equals small r by capital R. That's it. That's the solution. इस point पे there is no torque because आपकी gravitational force जो है it is passing through the instantaneous axis. ठीक है? And there is only normal force n2 over here and n1 is 0. Right? So that's all. No torque and n2 is equal to mg. That is the condition and this is your final answer.